आप पहले ही ब्रांड पे चक्का तो नहीं मार Correct. सकते हो. ये सब मार्क जुकरबर्ग का गलती है दोस्तों. उनको वो आदत हो गई ना बाहर सब्जी खरीदने की. So Himanshu, what has your journey been from, just two brands in your box to, now 30 brands which you are working on, and from a team of 3 people to 30 people? How has this journey been? Or any last piece of advice that you would like to give our viewers, to aspiring designers, students out there? Subscribe to this channel. Oh, that's so sweet. Our studio is packed with energy today. He brings a lot of light to our studio. He is Himanshu Bisht from Shabak. He is at a post where he has a team of 30 people working under us, and he has an umbrella of 35 plus brands working under him. Yes, you heard that right. He is a visual illustrator, an artist, and a cartoonist himself with over 12 plus years of experience. He has been in this industry like nobody else. We welcome him on board. Welcome to the Serial Designer, and subscribe to my channel and never miss another update from us. Please fill in the comment section whatever questions you all have. He is ready to answer them. Thank you so much. So welcome, Himanshu Bisht. Thank you so much. And Thank you. I'm very excited today to have you on my podcast. Same here, same here. And you've been in this art and visual art industry for over 12 years now. Correct. You've worked with a major brand of Shabang, and you've worked on n number of different clients. So where did this humble journey begin? Where did this journey begin? It's been 12 years, yes, correct. But I started off as a cartoonist, All right. honestly. I mean, I still am a cartoonist, but this is more of a hobby now. I do it for myself. Earlier it was more for money and all that, but Yeah. I thought that maybe, थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं. ये विजुअल जर्नी अपनी एजेंसीज को देते हैं थोड़ा सा. लेट्स डू समथिंग क्रेजी फॉर बिग ब्रांड्स लाइक एरियल, HDFC, Skybags, all these brands. And today here I am. So your journey, as we've already discussed, your journey has been from, you started off with 3 brands and now you have like 30, 35 brands in your, your portfolio. Yeah. But how did you just come up with this, and what was your journey of being an associate like? I mean, it's been 3 years that I'm working with Shabang. Okay. And I started off with 3 major brands like Asus Laptops was one of them, Okay. Hansaplast was one of them, and HDFC Life was one of them. Mm-hmm. And today I have more than 20-25 brands. And from the team of 3 to 4 people, now it's 35 people overall. Where I also manages animators and video editors, because still creatives देख के बोर हो रही था. मैंने कहा थोड़ा सा लाइफ डालते हैं इसमें, तो I got animators and editors in my team. So Okay. yeah, it's been great. I mean, until last year also I was working with Delhi for Shabang. So then it was crazy. I mean, honestly, then there were about 40 plus brands. So and 60 plus people, back and forth traveling between Bombay to Delhi, Delhi to Bombay. So that's what. And you see, 40 brands means 130 or 50 internal WhatsApp groups. Oh my god. That's just internal, not even with clients. It's just internal. Design, client servicing, copywriters, all that stuff. All right. So as you just mentioned, design, copywriters, there are n number of people involved in this process of say one brand. Usme bhi you work with international and Indian brands. So how does that go like? I mean, I'm sure the people also working are very different. Correct. Yeah, they are. I mean, that depends on their hierarchy. So if somebody who's junior, might be working on, or he or she, sorry, would be working on just one brand. But then as they progress, they understand the industry or they understand their work and they can manage between 2 or 3 brands. So that person can be in the similar international or national. Okay, that's how you all segregate. Yeah. So once, so just for example, just a person starting out as a visual designer like yourself, and when he starts working in a corporate
office like Shabang. So what can he expect first to become? Like, what's the hierarchy like? For a Like, designer, if he wants to be someone like you, what are his footsteps? for a designer or For a designer, oh, yeah. designer. I mean footsteps. यार I mean what I say them कि overwhelm मत हो चीज़ों को लेके. ठीक है, ये मत सोचो कि ओ मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है मुझे. और आई कीप टेलिंग दिस टू माई टीम ऑल्सो, जहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई हर जिसको भी मैं नया लाता हूँ टीम में, और दे कम टू मी, दे से कि हिमांशु मुझे लग रहा है कि आई डोंट हैव इट, इट्स टू मच फॉर मी, इट्स गेटिंग टू मच फॉर मी, और मेरे से डिज़ाइन नहीं हो रहा है. एंड देन आई हैव टू टेल देम कि इधर आओ, थोड़ा सा टेड टॉक देना पड़ता है उनको कि ज़रूरी नहीं है ना कि आज ही चक्का मारना है. थोड़ा टाइम लो, अभी 1 महीना 2 महीना, लोगों को जानो, लोगों के नाम पहचानो, ब्रांड समझो क्या है, ब्रांड को अपना दोस्त बनाओ, लोगों को अपना दोस्त बनाओ. फिर उसके बाद स्टार्ट showing what you can do and what you cannot. Correct. Let people have some expectations from you कि हाँ ठीक है ये अच्छा काम करता है एज अ डिज़ाइनर, पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि कितने हद तक ही अच्छा कर सकता है, बिकॉज यू आर स्टिल ग्रोइंग. है ना, एक पौधे से तुम अभी फल नहीं मांग सकते जब तक वो पेड़ नहीं बनता है. तो just wait for it. So basically game is all about patience. Patience, yes. And like you said, आप पहले ही ब्रांड पे चक्का तो नहीं मार सकते हो. But again, the generation is very impatient in general. Correct. Shorter spans, attention. I mean, I'm sure you have a bigger team, so you must be getting all these people with you. But then what advice would you like to give them? The people with shorter span? Yeah, with shorter attention spans, impatient. I don't know. Even I have the same thing because it's ये सब मार्क जुकरबर्ग का गलती है दोस्तों. जब से इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब आया है, रील्स आया, तो अपना अटेंशन स्पैन और छोटा होता चला गया है. दैट इज व्हाई यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मूविंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स. पहले स्टैटिक्स देख लेते थे, मज़ा आता था, फिर मीम्स देखते थे तो मज़ा आता था. अभी धीरे धीरे वो लोग रील्स पे आ गए हैं, अब उसमें भी मज़ा आने लग गया. तो कि वो अब रील का भी कंटेंट कितना छोटा होता चला गया है, 60 सेकेंड टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड टू 15 सेकेंड्स. अब 15 भी नहीं करना है, सीधे 5 सेकेंड में वो कुछ एक पानी का वीडियो आता है, एक वीडियो क्लिप प्ले होती है और बस खत्म हो गया. That's what people are seeing. But again, as a designer, like you said, पानी का कुछ क्लिप आता है. So as a designer, what's your opinion on that? I mean, if that's the kind of content you're putting it out there. Yeah, I mean that's what people are believing or want to see. I mean that's अगर वो ट्रेंड में चल रहा है, let's use the word trend. जो ट्रेंडिंग है वो चलेगा ही. आई मीन क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा काम लोगों तक पहुँचे, और वो वैसे ही पहुँचेगा जब मैं ट्रेंड वाला कुछ करूँगा. That's what. But again, getting back to like you said, the team. That team has varied number of different kinds of designers. See, every designer doesn't think the same way. Correct. There are all different kinds of people you have under that one roof. How do you like sort of navigate them to the one brand that you are working on to get everybody on the same page basically? How difficult is it? It's very difficult honestly, but ऐसा ना अभी 10-12 साल काम कर लिया है. Correct. और as a manager only it's been 4 years. And like from art director, senior art director and to ACD now, अभी ना सब लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग गया है. When everybody who's in my team right now, सबको मैंने हायर किया है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो. ठीक है, आई डोंट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ओके दिस इज समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे इमीडिएट जूनियर का काम है लेने का. नो, आई वांट टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम द डे वन. सो मेरे को पता है कि ये बंदा आपको इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा देगा, सो आई विल पुट हिम इन ऑन दिस ब्रांड. करेक्ट. ये बंदा इमेज मैनिपुलेशन बहुत अच्छा करता है, आई विल पुट हिम दिस ब्रांड. ये लड़की टाइपोग्राफी बहुत अच्छा करती है, आई विल पुट हर हियर. सो अकॉर्डिंगली उनका स्ट्रेंथ देख के विल पुट देम ऑन सर्टेन ब्रांड्स एंड देन टेल देम ऑल्सो कि ये जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, ये तुम्हारा वीकनेस भी हो सकता है इफ़ यू ओनली स्टिक टू इट. करेक्ट. तो विल टीच यू. तो जो इलस्ट्रेटर हम उसको मैनिपुलेशन भी सिखाएंगे, टाइपोग्राफी भी सिखाएंगे. तो टाइपोग्राफी जो करती है उसको हम लोग इलस्ट्रेशन भी सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे. दैट मेक्स मोर सेंस क्योंकि एवरी ब्रांड इज नॉट डूइंग द सेम थिंग. करेक्ट. है ना, मतलब जो सेम कैटेगरी के 2 ब्रांड्स हैं वो भी अलग अलग ही काम करें, चाहे वो स्विगी जोमेटो हो, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. है ना, बट द वे दे स्पीक टू देयर ऑडियंस, द वे दे पोस्ट देयर क्रिएटिव्स और देयर होर्डिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ इज वेरी डिफरेंट देन टू ईच अदर.
So that's So when you said you hire people, what is that one skill which you are finding when you're hiring as an employer? what is that skill? I mean, honestly, कि वो कितनी बातें करते हैं दिल खोल के, मतलब I want to use word बकचोद, but Oh my God. but yeah. But yeah, I mean, like you said, communication, Correct. right? अभी आप बोला कि the way you say something, Correct. that means that brings a lot of you on the Correct. on the table. Correct. So exactly when you said that वो कितना बोलते हैं, तो क्या डिजाइन के बारे में बोलते हैं कि यार about मेरे को themselves? मैं ना ऑनेस्टली उनसे डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं पूछता हूँ. Okay, मैं- that's interesting. That's what I do. मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, बाद में जब वो सेलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, जितने हुए हैं वो आके यही बोलते हैं हिमांशु ने एक भी डिज़ाइन का सवाल नहीं पूछा है. बिकॉज मैंने जो डिज़ाइन का तुमको देखना था मेरे को तुम्हारे काम से, वो मैंने तुम्हारे पोर्टफोलियो पे देख लिया है. वो मैंने तुमको असाइनमेंट भेज के जो तुमने मेरे को भेजा है वो मैंने देख लिया है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु आर यू? So what do you want to do? What are you doing today? What will you do tomorrow? What are your weekends plan? That's what I get into. Trying to be, I'm not trying, but I'm. This is my way of coming to you as somebody कि भाई मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत कोशिश नहीं, बहुत ही सिंपली तरीके से रख रहा हूँ कि let's be friends. दो दोस्त काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है. Correct. It's two friends, but ये है कि मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं. एज में भी और डेजिग्नेशन में भी, पर या whatever. And of course, experience also correct. matters. But majorly I see that how they construct sentences when they're explaining certain things. कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आपको कोई बाइक पसंद है, लेट्स से कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किसी बाइक पे, तो बताओ जरा बाइक क्यों पसंद है. इवन दो आई डोंट लाइक बाइक्स, मेरे को कोई बाइक में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू. व्हाट इज दैट थिंग दैट यू लुक इनटू अ बाइक? What as a designer you are looking into it? क्या तुम्हें उसकी टंकी पसंद आ रही है या उसका जो शेप है वो पसंद आ रहा है? So design is hidden everywhere, Correct. but how you explain it is what I look into it. So that's it's actually very contrary. Like at one point you're a visual artist. Correct. Like आप visuals पे काम करते हो. And at one point you're like communication, जिस तरीके से आप explain करते हो, that is the key here. तो why is this? How is this different? How I am Yeah, I mean, how is your ideology different? कि आपका communication आपने बोला strong होना चाहिए. Correct. But at the same time you're a visual artist. okay. Yeah, How is this contrary? it goes hand in hand. How see, I mean, मेरा एक सीन है, मैं ना जब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ों से एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ. यू वुड सी इट पूरे इंटरव्यू में और जो पहले अभी तक हुआ है उसमें कम्युनिकेशन में, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सब्जी का रेडी लगाई और मैंने वहाँ पे सब्जी बिछाई हुई है, ठीक है, अब मैंने बोला कि 100 रुपये की है वो, किसी ने पूछा कि मेरे से कि सब्जी कितने की है, मैंने बोला 100 रुपये की. क्यों है 100 रुपये की? मैं कैसे, आई नीड टू टेल दैट पर्सन नो कि मैं सुबह उठ के जाता हूँ, मैंने इसमें डाला पानी, ठीक है, मैं इसको धोया, मैंने पेस्टिसाइड्स अच्छे यूज़ करे, मैंने इसको ला के यहाँ रखा, घूम रहा हूँ धूप में. सो दैट इज़ वाई द कॉस्ट ऑफ लेबर इज दिस. Perfect. I am communicating, I am selling my product to you, my baby to you. That's what designs are. That's how designs are. कि अगर मैंने कुछ एक क्रिएटिव बनाया है, ठीक है, चाहे वो मेरी शादी का कार्ड ही क्यों नहीं है, फॉर बेस्ट एग्जाम्पल, तो मैं सिर्फ जाके दे नहीं रहा हूँ लोगों को. आई एम ऑल्सो टेलिंग देम प्लीज कम टू दिस ऑल दैट स्टफ, है ना. तो वो दैट डिज़ाइन हैज़ टू बी सोल्ड इज बेसिकली कि मेरा डिज़ाइन मेरे से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मेरे बच्चे की गलतियाँ मुझे ही पता है, मेरे बच्चे की खामियाँ और अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें, बुरी आदतें सब मुझे ही मालूम है, किसी और को तो नहीं मालूम होगा ना. आई कांट टेल माई पड़ोसी टू गो एंड इंट्रोड्यूस माई किड टू द फ्रेंड्स. So, जितना डिजाइन बनाना इम्पोर्टेंट है उतना ही डिजाइन एक्सप्लेन करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर देयर इज दिस गैप कमिंग. कि आप अच्छे डिजाइनर ज़रूर हो, बट आर यू लाइक एक्सप्लेनिंग योर डिजाइन टू द फुलेस्ट? करेक्ट. Are you trying to explain it? And there, I feel, you must have been through that. You have a team working under you. There are many people who will shy away from explaining. Correct. They'll be just like, "Aap kaam le lo, but please don't tell us how to explain the work." So that's where I think you come, and that's why you're at a managerial role rather than a designer's role. Correct. But I think there is a gap in understanding design and doing the design. काम कोई भी कर लेगा, like you said, but आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या कि आपका काम क्या है?
But yeah, I think that makes a lot of sense. Yes. What is the difference between an Indian clientele and an international clientele for you? Oh, Indian clients knows that they are designers. International clients knows that I am the designer. Correct. So that's the major difference. That they trust me with my work. They know Alright. that अभी हिमांशु को काम दिया है, or anybody for example, I don't know how's their experience, but my experience has been that कि अगर हिमांशु को काम दिया है तो he knows his job. As long as he can, he has put a thought behind it. कि मैंने अगर कुछ सोच के लेके गया हूँ कि मेरे को ये करना चाहिए तो they will buy it as long as I have the tendency to sell it. Correct. इंडियन क्लाइंट्स मैं उनको एक ही क्रिएटिव के 8 9 ऑप्शन दिखा दूंगा, बट उनको वो आदत हो गई ना बाहर सब्जी खरीदने की, वैसे कि Correct. 10 स्टॉल लगे Also हुए थोड़ा हैं. वसूल करने की हाँ, कि पूरा अगर if we निचोड़ are के. paying it, Correct. तो we are going to take options. Correct. And whereas the international client will trust you Correct. on your design. Correct. That's their job. Yeah. Correct. So I think that's the major difference when it comes to that. Yeah. And what about appreciation then? एप्रिसिएशन, आई मीन जिस तरह का एप्रिसिएशन मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलता है, और जिस लाइक दे आर वेरी वर्बल विद देयर एप्रिसिएशन और द कम्युनिकेशन बेसिकली. यहाँ पे क्लाइंट का एप्रिसिएशन इमोजी. Oh my, are you? Nice job. Nice job. The creatives have come really good. So, Nice job. Nice job. Kudos to the team. This is what they get. Correct. And when I'm working on an international client, she would send me a 2-minute long voice note, or she would mention it on the email also that okay, Himanshu, these creators have come really good, like clients loved it, internal team loved it, and all that. So you could feel that okay, this person has shown this creatives to somebody who has liked it and all that stuff. That's the kind of communication that I'm talking about. If you are going in, go all in. Don't be just ऊपर से. Correct. But that's what, see, as a designer, then you'll be, I mean, that's how I think human nature also works, कि आपको थोड़ा appreciation मिलेगा तो शायद आप better काम कर सकते हो. Correct. So I think even like you, because you're working with your team, a little motivation from your side, a little appreciation from your side will always help the designer to do more. It does, yes. Yes. And Yes. while we're talking about the team, how do you what's your process of hiring a person? How do I hire? Yeah, like do you see a resume? Do you ask for a portfolio? What do you do? Honestly, I think I'm going to be one of those people. And I'm hoping कि मेरे ऑफिस वाले ना देखें ये. कि I don't look at their resumes. I literally look at just their work or where they are working currently. Okay. Because जो resume में लिखा है ना, वो मैं अभी उनसे बात करने वाला हूँ. If I like your work, if I see that your Behance is beautifully presented or curated, or the project that you worked on is good enough for your years of experience, then I would ask कि उधर क्या है resume में. I would not take the effort to go and read all those letters, words that have been put there. I mean, I am one of those people. I'm not saying everybody does it, but yeah. And what do you see again? Are there rounds of interviews? Like if I'm an intern and I want to apply for the job of a visual artist or an illustrator, what do I come up with? How do I prepare myself to apply for that job? I mean, for that you need to understand what exactly are you applying for. Like if the job says we are looking for illustrator intern, then you make sure that your portfolio only has illustrations, different angles, perspective, किस तरह से तुमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके साथ. सो ऑल ऑफ दैट वुड मैटर. अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अपना इलस्ट्रेटर का काम भेजूंगा तो यू वुड नॉट गेट हायर्ड. Correct. बिकॉज देन यू डिडंट अंडरस्टैंड द ब्रीफ. Correct. आपने सुना ही नहीं मेरा कि मैंने क्या बोला है ना. तो दैट्स द थिंग. शो योर बेस्ट वर्क. टॉक अबाउट योर बेस्ट वर्क. टॉक अबाउट कि तुम्हारा क्या रोल रहा है एज अ डिज़ाइनर. ठीक है, तुमने काम किया, तुमने डिज़ाइन किया, पर तुमने किया क्या उसके अलावा. डिड यू से कि टू एवरी चेंजेस हाँ ये करते हैं, हाँ ये करके दे दूँ, ये करके देती हूँ, ये करके देता हूँ. और डिड यू हैड अ से और यू हैड अ से टू कि आई डोंट थिंक सो दिस इज वर्किंग आउट, आई थिंक दिस कलर कैन बी चेंज, दिस इज द अप्रोच दैट आई कैन टेक.
that's what. So basically, a person who has an opinion Correct. will always matter. Like the person who knows how to, when you said communication is key, a person who knows how to explain his opinion Correct. also will matter. Yeah, I mean ओपिनियन सबके पास है यार. हम सब किसके पास नहीं है ओपिनियन? सब गूंगा भी ओपिनियन दे रहा होता है. हाँ, तो सबके पास ओपिनियन है. When it comes to your work, then you don't have any opinion. ये क्या बात हुई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Always put your opinion. How you put it, that also matters. Sometimes I have come across with such people also that कि मैंने उनको ये बात बोली है कि पूछो सवाल, तो अब वो फालतू के सवाल पूछने लग गए. तो वो एक अलग ही टेंजेंट में. हाउ यू अंडरस्टैंडिंग, हाउ आर यू रीडिंग द रूम, कि तुमने उसको फिर अपनी लाइफ में कैसे लिया है, दैट ऑल्सो मैटर्स. ऐसा नहीं है कि बोल दिया है तो अब तुम बोलने के लिए बोलने जा रहे हो. that's also a part. Correct. And like you said that, आप कितना बात कर पाते हो, कितना communicate कर पाते हो. So do you like ask them about their design only, or do you like ask them about what they feel? And I mean, see, I just want to know how that interview process works. My interview process has nothing to do with designs. Honestly, I ask them. Correct. आज क्या खाया, शाम को क्या खाने वाले हो, कल को क्या करोगे, घर में कौन कौन है, क्या चल रहा है. तो just explain. I am trying to know you. I am trying to know who I am hiring. Correct. I am trying to know if this person is ready to be a part of the advertising agency or industry, because it's a very hectic job. Honestly, you might have heard 9 से 5 का एक job रहता है, which is for I don't know, semi-government or government employees. But we work सुबह 10 बजे से घर वापस जाने का कोई टाइम नहीं है. Perfect. है ना. तो there are no weekends for us. I mean, at least for me at my level, but I make sure that my juniors have those weekends. But yeah, these certain questions where I'm trying to understand who you are, that's my process of hiring people, कि मैं जानूँ उस बंदे को क्या है. और here and there I keep asking them कि okay, कौन सा नया कैंपेन देखा, क्या सीखा उस कैंपेन से. Are they getting well exposed? Yeah. Is what क्या you're... तुम क्या देख रहे हो तुम उस एड में, ऐसा है ना. तुम किस चीज़ पे नज़र रखी है तुम्हारी, तुमको क्या पसंद आया उस एड में. Amazon का कोई ऐड देखा तुमने तो तुमको क्या अच्छा लगा उस ऐड में, बताओ. लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट डू यू थिंक Coca-Cola, why Coca-Cola is only doing videos, nostalgic videos around दिवाली, है ना. क्योंकि सब उसको वो इंसाइट पकड़ा है उसने कहीं ना कहीं, कि लोग जो है वो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, बच्चे काम वाम करते हैं, तो ओपन हैप्पीनेस बेसिकली, कि ये Coca-Cola पे ओपन हैप्पीनेस, गो बैक होम एंड celebrated with your family. So that's the insight that they took, or they played with it. Correct. So as a designer, one should be very open to seeing all these things. Correct. And visually also they should be open to understanding, and but again, dedication, passion, काम करने का, inputs देना, opinions देना is all fine. But on that ground level, like if I want to apply, तो मैं क्या skill develop मेरा कर सकती हूँ, what softwares can I use, and to match up to that level. सबसे पहली चीज़ Canva भूल जाओ. Yeah, Canva has ruined it up for us. That's a very bad design tool. That's not for you. Okay. You're not a designer. I have seen profile where people have written Canva designer. I'm not looking for Canva designer. But yeah, software, basically Adobe, Photoshop is something that you should know. Correct. Because major काम वहीं हो रहा है. Illustrator is one of them, because you anyway in your life you're going to do print work. You're going to make hoardings, poster, whatever. Visiting card तो बनाओगे छोटे से छोटा किसी ना किसी के लिए. Sticker ही बनाओगे. Correct. So you should know that software. After Effects थोड़ा बहुत सीख लो, Premiere Pro थोड़ा बहुत सीख लो कि कैसे टाइमलाइन काम करती है उसमें, कैसे ट्रांजिशंस ऐड हो सकते हैं, ना how you cut videos and all that. FCP थोड़ा बहुत, Final Cut Pro. और आजकल तो अब AI की दुनिया चालू हो चुकी है. People thought that लोगों की जॉब खतरे में, पर नहीं है, क्योंकि AI को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए. तो Mid Journey सीख लो, बहुत Yeah, okay. Learn how to. Yeah, actually I was coming to that question only, that आपका AI के बारे में what's your opinion on it, and those prompt engineering, what they call it, what's your opinion on it? I was just coming to that. I mean, I like how it has made our job easier. मतलब बहुत चीज़ें, मतलब जो काम करने में जितना टाइम लगता था उसको तो
15-10 मिनट कम कर दिया, आई वुडंट से कि बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है कि हाँ मैंने ताल छूट की बजाय क्रिएटिव तैयार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिकॉज अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करके मेरे को फिर उसके बाद करना ही है उस पर काम, करेक्ट है ना अल्टीमेटली, क्योंकि वट एवर प्रॉम्प्ट दैट आई एम राइटिंग देयर, it's not giving me a final image. I'm still spending some time on mid journey. बट आई थिंक इट कट्स डाउन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. It cuts down, yeah, I mean, पर कुछ ओरिजिनल नहीं हो रहा ना फिर वहाँ से, करेक्ट. मतलब अगर फिर वो बहुत मैकेनिकल हो गया है. इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अ विजनरी और वांट टू बी कॉल्ड अ विजुअल आर्टिस्ट, तो तुम्हें थिंकर होना पड़ेगा ना पहले. तुम्हें वो विजनरी खुद अपने दिमाग से होगा, कंप्यूटर से सबने करना था तो तुम्हारा क्या काम है फिर. Correct. But like you said that, to grab the essence of a brand and then work on towards it, AI won't be able to do that for you. How will it try to grab the essence of the brand or whatever? So I mean, yeah, I mean, खतरे में तो नहीं है jobs. Definitely being a visual artist, because that's the concern of the industry itself. Yeah. कि मतलब visual artists, digital artists, illustrators, they all are like, अब तो AI में ही हो रहा है सब, तो why would we, hire some people, from the brand to do it for us. Like, we can also do it on our own. But of course, that's not the case. Correct. At least for bigger brands and bigger visionaries. Okay. I mean, I know when AI came, people were shit scared. Yeah, they People were. like कि अरे भाई ये क्या आ गया है, ना इधर लिखा 15 मिनट में इमेज तैयार है. क्योंकि the kind of videos that circulated over internet, वो that scared people जब तक उनको वो यूज़ करना नहीं आया था. वो बिल्कुल वो 2000 रुपये में चिप लगा हुआ है नया वाला, वैसा न्यूज़ हो गया था. वो फेक न्यूज़ जैसा फैला था वैसा definitely. We've been through that. But yeah, I mean, now that people have find peace with it and they are using it on day-to-day basis, and I have met clients or gone on calls with clients where client has said कि हमको चाहिए ही नहीं AI हमारे brands पे. Yeah, We don't want AI work on our page. correct. So there's no AI policy also. Yeah, there is no my AI God. policy. Oh, that's wonderful. I mean, that's new. Yeah. But yeah, I mean, it should be. I mean, if you're hiring an agency, I mean, why would we want an AI to do the job for them? We are like, of course, it makes sense. So Himanshu, what has your journey been from, just 2 brands in your box to, now 30 brands which you are working on, and from a team of 3 people to 30 people? How has this journey been? I mean, honestly, to get those brands, the pitches that we have done, the pitches we have won, great. I mean, वो एक अलग ही खुशी है. Correct. Hiring new people, of course, is a new thing. It feels like a joint family. Correct. पर अभी तो मेरे टीम वाले आके बोलते हैं भाई टीम नहीं है, इसको जिला घोषित कर दो, क्योंकि जितने लोग हैं इस टीम में, we need more space. But yes, I mean, journey has been great. The kind of brands that has come onboarded, and the way they speak to their audience, the way the work that happens on those brands, it's incredible. I mean, and keep a track of what is happening where, that is also something Yeah. great. But it gets exhausting at this level. But I think that's the ask as a manager. Correct. Ki if I'm not designing, at least that's the least I can do, is to know the brands, what is happening, what kind of work that we're doing on, and how we can enhance that brand. So it feels like a responsibility, but it's fun. I love it. But like you said, आप पहले visual artist थे, you were a cartoonist yourself. Correct. Then from there you went to a senior, and then to an to an associate art director, to an associate creative head of a major brand who's working in this field. So when you just look at your journey, how has your journey been from one brand to another to maybe there where you reached now? So you're not designing, like you said, you're at a managerial role now. Correct. So how is that giving you a hard time, or what is it, or this is what you enjoy now? I mean, when I started off as a cartoonist, I was, or let's say in this industry, at least as a designer, I was struggling a lot, because मैं एक purely hand drawing artist था. फिर उसके बाद पे ग्राफिक डिज़ाइन मैंने पकड़ा है कि हाँ चलो ये भी करते हैं, ये भी सीखते हैं, और फ्रॉम देयर आई हैव मेड माई वे थ्रू कि ठीक है, ये दिस इज गेटिंग फन बेटर और ऑल दैट स्टफ.
And as I grew, responsibilities have changed. कि ठीक है, पहले मैं खुद अकेला था, फिर एक ऊपर गया तो एक जूनियर आया मेरे अंडर, फिर मैं ऊपर गया और फिर 2-3 आ गए, तो 2 से 3 ब्रांड्स हैंडल किए. एंड धीरे धीरे आस्क चेंज होने लगा मेरे को लेके, बिकॉज बातें बहुत करता हूँ ना मैं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम बातें बहुत करते हो तो बिकम सीनियर आर्ट डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर और देन ACD टुडे. बिकॉज कि अगर कोई और नहीं कर पा रहा है वो काम टीम में, तो हिमांशु कैन डू इट. एंड Correct. आई एम एंजॉइंग दिस मोर बिकॉज अभी ना मैं बैठ के 20-30 ब्रांड्स के लिए सोचता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को. कि कुछ कुछ बड़ा आता है उस पर तो मैं ले लेता हूँ वो फट कि लेट्स से अगर स्काईबैक्स पे अगर कुछ काम आया है, कोई बड़ा Correct. कैंपेन करने वाले हैं, आई बी द फर्स्ट वन टू गो देयर एंड Correct. आई वुड से कि मेरे को करना है इस पे काम. किसी और दूसरे ब्रांड पे कि लगता है कि अच्छा मैं इधर बिजी हूँ और इधर कोई और कर सकता है, उधर आई विल सेंड इट टू दैट पर्सन. बट डिपेंडिंग कि मेरे को क्या, अभी नाउ आई हैव लिबर्टी टू चूज Correct. एज एट दिस पोजीशन कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता But हूँ. that after 12 and 15 years After of 20 years, yes. dedicated work, passion. So that's why I said that, as a visual artist, when I'm like applying for it, I'm very impatient because, of course, like you said, thanks to Facebook, we have very shorter attention spans. So you cannot expect कि तुम 2 या 5 साल में you can achieve that. Correct. You have rigorously worked for 12 to 15 years Correct. with sincere dedication. Now you're at a place where you're just like, I can just think about it and then it will be applied by juniors or however. Correct. So that notion, I think, even because these, I would not say Gen Z, but they do have this notion that, we want overnight success or, we want a team working under us, but it doesn't come in a day. It doesn't come in a year also. So that impatience has to be, resolved. Correct. And I think that's the advice which in general I feel. I mean, see, I've spoken to a lot of designers. I mean, you being an art director, I've spoken to like different interior designers, architects in various fields. They all have the same issue कि interns नहीं है market में because they all are just switching because they are not stable at one place and they want to just hop to different places to see where they can Basically, they're excel. experimenting in They're terms of, experimenting and not sticking to one place and leaving jobs, pivoting careers. So what is your opinion on this? I mean, I would not say bad thing about it. I would say that's a good thing. Correct. If people are experimenting, hopping from one job to another, and at that age, let them do it because that's their age. They want to see what is happening outside. They want to see if this place is for me or not. If this place is for me or not. क्या ये brands पे मैं काम करना चाहती हूँ कि नहीं, या ये brand पे काम करना. Because work environment is also different in different agencies or different places. So I respect them. ठीक है, आप करो 1-2 साल, आपने जो मस्ती करनी है इधर घूमो. It's like club hopping for them. Correct. They're going from one place to another. Correct. Do that. That's okay. But फिर वो एक टाइम आ ही जाता है कि आप क्लब हॉपिंग से फिर आप धीरे धीरे कैफेज आते हो जहाँ पे आप बैठ रहना पसंद करते हो. तो आप देन यू बिकम, तो वो एज आप पकड़ लेते हो कि हाँ ठीक है, 23-24 साल की एज में नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड गेटिंग सीरियस फॉर योर वर्क कि दिस इज माई वर्क. आई डोंट वांट टू बी एन इलस्ट्रेटर, आई वांट टू बी a graphic designer. Correct. And I don't want to be a 3D modeling artist, I want to be a UI UX website designer. So I think I fully support. I mean, it's very good because now they will get some backup. Yeah. कि भाई हाँ, at least somebody is there who supports us, because most of them are very, I'll tell you, like most of the complaints are from designers who are facing this trouble कि भाई बहुत impatient है, इधर उधर भागते रहते हैं, क्या करने का, how do you control them. But like you said, you don't need to control them. After a point it will naturally come to them, organically fall into place. Correct. All right. But on a very lighter note, what's a typical day in the life of you as a designer, as a visual artist? Now in ACD. but- Now as an ACD और आर्ट डायरेक्टर ऐसा ही है, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है. बट मोस्टली आई स्पेंड equal time on Pinterest, then I spend my time on Instagram. तो मतलब पहले मेरी ज़िंदगी में Pinterest नहीं हुआ करता था 4-5-6 साल पहले तक. पर अभी now that I've realized that as a designer I need to spend more time here. I want to see stuff, what is happening. Now I spend more time on YouTube watching ads. Save those ads, not just here कि इधर के ads नहीं देख रहा हूँ मैं इंडिया में क्या हो रहा है, but I'm also looking at
the stuff that is happening outside. How I am not saying that I am making ads every day for my brands, but at least, पर ऐसा होता है कि वो ads वो रह जाता है subconscious में, कभी ना कभी फिर वो याद आया, let's do this Correct. on this brand. कभी कुछ नहीं पता कौन सा brief कैसे आ जाए, और you can use this ad somewhere. So mostly it's spending time scrolling through Pinterest or Instagram, going through briefs. What is new for me? What is the task that I'm doing? What is the pending work that is going on? And PlayStation. Then yeah, books. Ending my day with reading some Hindi books. That's all I do. अपनी भाषा सबसे best है. That's that's a very nice way of putting it out, very slyly. Anyway, so like you said कि you know मैं पूरा दिन content देखता हूँ, you know I consume a lot of content, social media content, Pinterest and YouTube. So that's what you're trying to imply, that as a designer one should be very good, well exposed. Yes. आप जितना देखोगे मतलब उतना सीखोगे. आप जितना देखोगे उतना सीखोगे. That's what you're trying to like imply कि you should take a lot of consume a lot of content. You know that's where the motivation and inspiration will sometime click and come from. Correct. So like you said कि आपने number of brands पे काम किया है, you worked on n number of brands. हर एक brand का कोई एक brief होगा which you all have to sit and decode as a designer group. Yes. How do you all do that? What's the process like? Process is the client sends an email with a attached document, or otherwise he or she takes us on a call and tell us कि भाई लोगों अगले महीने Pride Month है, let's do something about it. And something means यही है brief. That's it. कि यही है brief. We understand कि तो अभी यही तो task है अपना, तो that's what makes the job fun. So we go back in our brainstorming den, and somebody from the client servicing, me, from some designers, or somebody from the creative team or strategy team would be there, and then we'll think about it ki what can we do for a brand like Paytm on for Pride Month. Correct. So now we sit down, we discuss. It's more of a conversation that is happening. It's honestly like कॉलेज के कैंटीन में 4 दोस्त मिले हैं और अब पूरा दिन डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है यार, क्या बकवास, क्या मिला है ये, और क्रिप कर रहे हैं, बैंटर कर रहे हैं. बट इन दिस बिटवीन ऑल ऑफ दिस वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग द ब्रीफ कि दिस इज व्हाट वी कैन डू इफ पेटीएम हैज़ टू डू दिस थिंग. तो नाउ इसी में एक दूसरे पे फिर हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं. किसी एक के ब्रीफ को ये नहीं किसी एक के डिकोड को ये नहीं मान लिया कि यही भगवान है और अब इसी पे काम करते हैं. नहीं, you all go deeper. हाँ, with we go deeper. Yeah. कि इफ you said कि अरे हम लोग ऐसा दिखाते हैं शॉट की ऊपर से टॉप एंगल शॉट है और जिसमें लड़कियों के, बच्चों के, लड़कों के सबके हाथ दिख रहे हैं और यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग कि हाँ कि दिस इज फ्रॉम द कम्युनिटी. या तो वी गो इनटू इट कि बट व्हाट्स द इनसाइट इन इट, है ना. तो वो धीरे धीरे हम लोग उसमें बात करते रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ एक टीवी से आइडिया हो गया. हाउ वी विल सस्टेन दिस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. तो वी गो डीपर, एज वी गो डीपर वी फाइंड कि हाँ दिस वॉज द आस्क एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर इट. दिस इज जस्ट व्हाट वी आर थिंकिंग. एंड देन आई थिंक एज अ डिज़ाइनर ऑल्सो आई टेल माई टीम ऑल्सो टू डू देयर ओन रिसर्च. ये तो भाई हम लोगों ने ऊपर से किया है. You go back home, see some stuff online, what is happening, how people are doing it, what other brands have done it. Correct. And what you think can be done, because you're a visionary. You can think, you can design, plus you can think. And वो चीज़ ही कारगर करेगी जो तुम्हारे दिमाग से निकलेगी. तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो why not? So you go back, they think of some ideas, they bring some references, set a mood board, and then we discuss. Correct. Also design, like you said कि you know आप जब give them a few ideas and they come up with their own ideas. So when you're brainstorming, how do you like select a few ideas? Do you like make options? Do you like make alternatives? How does that work? Yeah, we do. I mean, we all make options. So basically it's part of research.
That's Yeah. what we are trying to I mean, like अभी do. मैंने बोला ना इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंट में क्या अंतर है Correct. कि एक इंडियन क्लाइंट को 8 ऑप्शन दिखाने ही पड़ते हैं, Correct. तो वो सिर्फ मेरे को ही नहीं दिखाने पड़ रहे हैं, वो ऑप्शन क्रिएटिव को भी दिखाने पड़ रहे हैं, जो स्टोरी जो कंटेंट राइटर है उनको भी दिखाने पड़ रहे हैं. Hmm. सो वो निचोड़ रहे हैं, तो वो सब पूरा निचोड़ रहे हैं वो सिर्फ डिज़ाइनर को नहीं निचोड़ रहे. तो वी आर डूइंग दैट, वी थिंक कि ओके दिस इज़ वन आइडिया दैट वी कैन डू, वन अम्ब्रेला थॉट पकड़ा और उसी के अंडर फिर हम लोगों ने Different करते चले options गए. and all. हाँ. Correct. So, like, see, honestly, when I'm also taking a formal education in this industry, हमें भी यही सिखाया जाता है कि you know you have to completely do a research work when you're working on a project. Do a research from start to end, and then you have to like crack the brief Correct. or decode the brief. Correct. So, is the same more or less the same process which you all follow in office, in corporate, It's the same thing. and in academics It's the as same well? thing. I mean, just जो भी तुमने स्कूल में पढ़ा है वैसा ही है, Hmm. जैसा तुमने कॉलेज में पढ़ा है वैसा ही है, जैसा तुमने और जगह काम किया है वैसा ही है, सेम. Hmm. पता है So ये because that's what see there are, because when हम academics में जब बच्चे पढ़ते हैं, they always have this question, why are they making us do so much for just one small project, just a 20-mark project? Why are we doing that? See, now they are thinking about marks, but what we as designers, we know that you know you will have to do so much research to reach that kind of an output. A well thought and a well researched output Research is basically to back you up, back Correct. up your idea. correct, कि हाँ and मेरा talk about it. correct. That gives you confidence, I think, to talk Yes, about it. yes. Any last piece of advice that you would like to give our viewers, to aspiring designers, students out there? Subscribe to this channel. Oh, that's so sweet. That's so sweet. Thank you so much. I would say don't let your employer eat you. I mean, or eat your inner designer, or let the client eat your internal designer. Be the original. Be what you want. Just keep doing it. I mean, don't stop. Don't let anybody come and tell you that you're not a designer. Everybody's a designer. You have the greatest power. You know the tool. That's what. So you have a touch of your design in whatever you do. Correct. Like you अपना said touch कि रहना आप चाहिए. आपके 30 लोग हैं आपके टीम में, पर आप एक को देख के बोल सकते हो कि ये उसका ही कि डिजाइन उसका ही है design एंड है. उसका हाथ है. So I think that's like how it goes. Correct.